Good morning, class. Welcome back to my channel. And we are doing classical mechanics. And yeah, so in the last two lectures, we have done the theory for the small oscillations. We have understood how to approach small oscillations question, the methodology to solve those questions, but still we have not taken any example to solve them. So today class will be a little longer class because we will be taking an example or examples maybe. So let's get to the class. And if you haven't seen the theory of this small oscillations, I would recommend you all to just go through the two previous lectures once you start with this class, because अगर वो नहीं समझ आएगा तो फिर न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, राइट? अगर न्यूटन्स के लॉज नहीं पता होंगे तो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर पाओगे आप, राइट? मैकेनिक्स के तो सिमिलरली अगर स्मॉल ऑसिलेशंस की थ्योरी नहीं पता तो न्यूमेरिकल्स भी कैसे कर लोगे? इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट अगेन थ्योरी पता हो तो यू वुड हैव मोर अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ कि हाँ यार ठीक है, समझ आ रहा है, जो क्लास में चल रहा है वो एटलीस्ट पल्ले पड़ रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा आई विल बी गिविंग रेफरेंस की लास्ट क्लास में क्या करा था. Okay, so let's give you a small brief कि last class में क्या हुआ था, and then we will move on to solving a question. So हमने देखा था कि how do we solve the questions for the small oscillations. Okay, so small oscillations in classical mechanics, इसके questions आपको करने हैं. So now what did we do? हमने ना पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था, राइट? दिस इज व्हाट वी डिड. सो हमने कहा था कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी मैट्रिक्स है, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी मैट्रिक्स है, विच इज टी आई जे, इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल ईटा आई डेल ईटा जे. दिस इज व्हाट वी रोट कि ये जो है मेरे क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी मैट्रिक्स है. और इस काइनेटिक एनर्जी मैट्रिक्स को यूज करके मैं अपना टी कैसे लिखती हूँ, द काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे लिखती हूँ. सो काइनेटिक एनर्जी टी इज इक्वल टू हाफ टी आई जे eta I dot eta j dot. Okay, so let me clarify. This is dots, right? These are dots. These are not eta I, eta j. They are actually different differentiation with respect to eta I dot eta j dot, which is what? Which is the velocity. एक तरह की velocity है ना, eta I dot eta j dot. Then we did what is the potential energy matrix? Okay, so this is very important. What are the potential energy matrix के components? So we wrote that Vij is equal to del square V upon del eta I del eta j. In this we have eta I and eta j. We do not have eta I dot eta j dot. We just have eta I and eta j. And इसको use करके how will we write the expression for the potential energy? V will be half Vij eta I into eta j. This is how we wrote the potential energy का expression. So now we have the potential energy का expression, we have the kinetic energy expression. Like we can write the secular equation. हमने फिर सीखा था कि जो secular equation है वो क्या है. So secular equation was V minus omega square t is equal to 0. This was my secular equation जहाँ पे V जो मैंने use करा था that was the matrix Ij and T जो मैंने use करा था that was the matrix Pij. Okay. So and after that what we said that the values of omega which will obey or which will satisfy the secular equation, the values of omega which obey the secular equation was called the normal frequencies, was called the normal frequency, and the x which is a column vector, you can say x which is a column vector xi, which satisfy the equation Vij minus omega square Tij xi is equal to 0 are called normal modes
are called the normal modes, right? This is what we have already done in the last class. Last thing that I want to say is there is one property of the normal modes which is very important, which will help you in normalization of the normal modes is, and since there is no space down, so I'm writing it over here. The property is xi transpose. We have tij xi is equal to 1. This is the property of normalization for the normal modes column vector, which is xi. So now how will we solve the question? ये तो हमने थ्योरी पढ़ ली कि ये चीज होती है. क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? सो क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड इज, लेट मी टेक अ, ये, सो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? सो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहली चीज व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी मैट्रिक्स. ओके. Second thing you have to do is you have to find the potential energy matrix. Third thing you have to do is you have to solve the secular equation. Fourth thing you have to do is you have to find the normal modes. Fifth thing you have to do is you have to normalize the normal modes. Understood? एक बार दोबारा लिखें. कैसे लिखेंगे दोबारा? देखो, सबसे पहले क्या करोगे, जो भी प्रॉब्लम दे रखी है, लेट मी राइट द हेडिंग. ओके, सबसे पहले क्या करोगे, सो इसको हम लोग हेडिंग दे देते हैं सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. ठीक है, कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है. सो स्टेप नंबर 1, फाइंड द लेग्रांजियन ऑफ द सिस्टम. सिस्टम का लेग्रांजियन फाइंड कर लो. ठीक है, फाइंड द लेग्रांजियन ऑफ द सिस्टम. जो भी हम सीखेंगे, ठीक है, जो ये भी हम सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बोल दूंगी खुद कर, नहीं, we'll learn it together. Find the Lagrangian of the system. Okay, all the dots have to pass. अभी सोचना है इनको. चलो, find the Lagrangian of the system. Second thing what we will have to do is we have to find the kinetic energy and the potential energy matrices. Okay, we have to find the kinetic energy and the potential energy matrices. What is the third step? The third step is we have to solve the secular equation to find the values of normal frequency, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा. I am writing the secular equation once again for you all. Vij minus omega square Tij mod is equal to 0. इसको सॉल्व करोगे, ओमेगा की वैल्यूज मिल जाएंगी. ठीक है, always remember omega should be greater than 0. It should always be greater than 0. ओमेगा 0 नहीं हो सकता, ओमेगा नेगेटिव नहीं हो सकता. अगर कोई 0 और नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, discard them. Do not put them in your answer कि ओमेगा की वैल्यू 0 है, because that is completely absurd. What is the point when the angular frequency of a system is 0? You cannot say that the angular frequency is 0. It doesn't mean anything, right? The fourth point what you have to do is, अब अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द नॉर्मल मोड्स, तो एक समझदार बच्चा क्या करेगा, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के बाद नॉर्मल मोड्स निकालेगा. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, तो एक समझदार बच्चा थर्ड स्टेप के बाद रुक जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बस नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पूछी है. अगर क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि फाइंड द नॉर्मल मोड्स, तो नॉर्मल मोड्स मत फाइंड करना. देयर इज नो पॉइंट ऑफ फाइंडिंग द नॉर्मल मोड्स व्हेन द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग फॉर दैट. ये तो फ्री का ज्ञान बांटना हो गया ना, है ना. सो अगर क्वेश्चन में बोला गया है नॉर्मल मोड्स निकालो, तभी नॉर्मल मोड्स निकालने हैं, अदरवाइज स्टॉप एट द पार्ट 3. नाउ if the question is asking for the normal modes, what do we have to do? We have to find the values, find the xi जो कि नॉर्मल मोड है, conjugate to each normal frequency. जैसे हर आइगन वैल्यू के लिए एक आइगन वेक्टर निकालते हो, सिमिलरली हर एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के लिए एक नॉर्मल मोड निकलेगा. अंडरस्टूड?
So find the xi conjugate to each normal frequency by solving. क्या solve करोगे? You will have to solve Vij minus omega square Tij xi is equal to 0. Fine. And last step, try to find the normal modes orthogonal. कोशिश करनी है कि जो आपके नॉर्मल मोड्स हैं दे आर ऑर्थोगोनल, ठीक है? क्योंकि अगर वो ऑर्थोगोनल होंगे सो दे विल बी लीनियर and they will form a basis. Okay, they will be linear, they will form a basis, and they will also be independent. Cool. And इस स्टेप में आपको आइगन जो आपके नॉर्मल मोड्स है, मैं कई बार नॉर्मल मोड्स को आइगन फ्रीक्वेंसी बोल देती हूँ बिकॉज दे आर वेरी सेम, एक तरीके से बिल्कुल सेम है उनका मेथड निकालने का। तो कई बार आइगन वेक्टर मतलब क्योंकि एनालॉजी है तो इसलिए यू कैन। ओके, नाउ normalization, what will you do? So you will have xi transpose tij xi is equal to 1. This is how you will normalize the normal modes. So what are the three formulas that you have to remember? Method तो याद रखना ही रखना है, but formulas नहीं याद होंगे तो method का याद करके क्या कर लोगे, है ना? So first formula that you have to remember is kinetic energy और potential energy matrix निकालते कैसे हैं? That is this formula. So first formula that you have to remember is this formula. Second formula you have to remember is this formula. Third formula you have to remember is this formula. Fourth formula you have to remember is this one. And fifth is this. Okay, got it? जब ये 5 फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, ठीक है? अगर आपको लैग्रैंजियन निकालना आता है तो। Now, moving on to how to solve a question. Let's take an example now. Let's learn how to write the Lagrangian of a system जिसके अंदर स्मॉल ऑसिलेशन स्प्रिंग्स हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है। बट विल स्टार्ट विद अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आप भी बोलोगे कि ये क्वेश्चन क्यों ही करा रहे हो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप सीधा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते ही एक एडवांस न्यूमेरिकल उठा लेते हो और आपसे फिर सॉल्व नहीं होता तो योर कॉन्फिडेंस जस्ट शैटर्स बिकॉज नहीं होगा ना, मुश्किल क्वेश्चन उठा लोगे एकदम से। जस्ट यू शुड ऑलवेज गो फ्रॉम the easy question and then increase the level. So let's take a easy question. Okay. So the question. Okay. Question. Yes. So the question is that we have a diatomic molecule. We have a diatomic molecule and we have to solve this system. Okay. So we have a diatomic molecule. एंड जो आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है ना उसको आप एक्सप्लेन करने के लिए ना हम लोग दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक स्प्रिंग अटैच कर देते हैं। जब भी आपको डायटोमिक एक बहुत सी थ्योरीज है जिसके अंदर आप डायटोमिक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए आप उसके बीच में एक स्प्रिंग लगा देते हो। एंड द डायटोमिक मॉलिक्यूल इज समथिंग लाइक दिस। सो वी हैव टू मॉलिक्यूल्स M and M and they are what? They are connected with a spring. So they are connected with a spring. And what is this K? This K is the spring constant of that spring. हर spring का एक spring constant है and that spring constant is K. What do you have to do? The question is, so this is the system. Now the question is find. Okay, I hope it's not very small. Let me write a little big. Okay, yeah. So the question is find the normal modes. Find the normal modes and the normal frequency of small oscillations in the given system. Okay,
So system is given to you. The main thing that you have to learn or from you have to see from the question is कि मुझसे मांगा क्या है. नॉर्मल मोड्स मांगे हैं एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मांगी है. तो पहले नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकलेगी तभी तो नॉर्मल मोड्स निकलेंगे, है ना. तो दो चीजें मांगी है, एक बार ही मांगा है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और मांगा है नॉर्मल मोड्स. नाउ हाउ टू सॉल्व. ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. Let's solve the question. So let's say that I have this coordinate system. I have this coordinate system. Fine. और जो मेरा स्प्रिंग है वो इस तरीके से रखा हुआ है. Yeah. And the spring constant is K. So I have two masses which are kept at x10 and x20. These x10 and x20 are what? These x10 and x20s are actually the equilibrium points. ठीक है? So I am assuming in the system कि जो मेरा x10 और x20 है वो क्या है? These are my equilibrium points. These are the equilibrium points. Okay, these are my equilibrium points x10 and x20. And now what happens is we have to first find the Lagrangian of the system, right? हमें Lagrangian find करना है, तभी तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के मेट्रिसेस निकाल पाएंगे. तो उसके लिए हम लोगों को पहली चीज देखनी पड़ती है द डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू सी इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम. तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम of the system. Now, this is a one-dimensional case, है ना? This is a 1D case. We have an x-axis over here, and जो masses हैं, they're just moving x-axis पे, है ना? X-axis पे ऐसे ऐसे move कर रहे हैं. तो पहले मास सिर्फ पहला मास कितने कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है? एक कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है विच इज x. दूसरा मास कितने कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है? सिर्फ x कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है. तो अगर दोनों मासेस ही x कोऑर्डिनेट में मूव कर रहे हैं, so degree of freedom for the first mass is 1, degree of freedom for the second mass is 1, and what is the total degree of freedom of this for the system? The system का degree of freedom is 1 plus 1, which is equal to 2. So 1 is for the n1, 1 is for the n2, and the total degree of freedom for the system becomes 2. That means इस सिस्टम को करने के लिए इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए how many generalized coordinates are needed? 2 generalized coordinates are needed to solve this system. 2 generalized coordinates का Lagrangian बनेगा. This is the significance of degree of freedom. जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतना जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आपके Lagrangian में होना चाहिए. दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ Lagrangian. नाउ मूविंग ऑन टू द सिस्टम, राइट. अब सिस्टम की तरफ देखते हैं. सिस्टम हमारे पास कुछ इस तरीके का है. अब हम लोग क्या करते हैं, लेट्स अब स्मॉल ऑसिलेशन कब होगी? जब इक्विलिब्रियम पॉइंट से हिलेगा ना सिस्टम, लाइक अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई, राइट. तो लेट अस से दैट हमने क्या करा, हमने इस स्प्रिंग के अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट कॉज कर दी. ठीक है, हमने क्या करा, we displaced the spring from its equilibrium point, and now the spring looks something like this. So we did this intentionally क्योंकि हमें small oscillations देखनी है, right? So what did we do? हमने इस वाले m को उठाकर इस पोजीशन पे रख दिया, which is the new position, और इसको मैं बोल रही हूँ x1. Let us say now the position of m is x1, and now the position of the second m is x2, right? So what did we do? We just did this कि हमने इसको उठा के x axis पे ही डिस्प्लेस कर दिया. ये मेरा x axis ही है, हमने सिर्फ x axis चेंज करा है दोनों मासेस का. अगर मैंने x axis चेंज करा है दोनों मासेस का, then what will be the displacement of first mass and the second mass? Let us say this is my mass number 1 and this is my mass number 2, and you have to tell me what is the displacement in the mass 1. That is what? x1 minus x1 naught. That is the displacement in the mass 1. And what is the displacement for the mass 2? x2 minus x2 naught. Right? Displacement कितना है? यहाँ से लेके, if I draw a dashed line, yeah, if I draw a dashed line like this and choose another color, so what is the displacement for the first mass? It is this. What is the displacement for the second mass? It is this. Okay, it is this. Now what do you have to do?
अब हमें इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, राइट? वी हैव टू राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. So let's write the potential energy of the system. So the potential energy of a spring. अब एक स्प्रिंग है ना हमारे पास, तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की कितनी होती है? हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. कूल, इजी टू, मतलब ये तो पता ही है, दिस इज वेरी बेसिक है ना. अब यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स इज द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग. कि स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन हुआ है, दैट इज माई डेल्टा एक्स. कि कितना स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ है. नाउ हाउ कैन आई फाइंड दिस इलोंगेशन? मैं इस इलोंगेशन को फाइंड कैसे करूंगी? ठीक है, इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर मुझे इलोंगेशन स्प्रिंग का लिखना है, तो मुझे पता है पहले स्प्रिंग का लेंथ क्या था. पहले स्प्रिंग का लेंथ था x20 माइनस x10, है ना. पहले स्प्रिंग का लेंथ था x20 माइनस x10. दिस वाज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. What is the new length of the spring? The new length of the spring is x2 minus x1, right? So the new length of the spring is x2 minus x1. पहले जो स्प्रिंग की लेंथ थी वो x20 माइनस x10 थी. तो हाउ कैन आई फाइंड द चेंज इन द लेंथ? फाइनल में से इनिशियल वाली लेंथ माइनस कर देंगे, फाइनल में से ओरिजिनल लेंथ माइनस कर देंगे. So delta x will be what? Delta x will be x2 minus x1 minus x20 minus x10. क्या इजी टू अंडरस्टैंड? आ गया समझ? अब हम लोग क्या करेंगे? लेट्स ओपन दिस, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं. लेट्स सी व्हाट कम. x2 मतलब 2 वाले को एक तरफ कर देते हैं, 1 वाले को एक तरफ कर देते हैं. लेट्स डू दिस. सो वी हैव x2 minus x20. Let's take a minus common. x1 minus x10. That is my delta x. Now, I don't know why, but this expression looks familiar to me. x2 minus x20. Right? I told you that we will be using a notation where we will be calling q1 minus q1 naught eta 1 to make our life easy. अगर मैं इस डेल्टा x को लेके चलूं, ये अगर मैं डेल्टा x को लेके चलूं, इसी डेल्टा एक्स को, और मैं यहाँ पे पुट करूं, तो मैं इसका भी स्क्वायर करूंगी आगे, तो मेरे पास कितनी सारी टर्म्स आ जाएंगी मेरे एक्सप्रेशन में, है ना. देयर बी सो मेनी टर्म्स इन द एक्सप्रेशन. तो मैं तो फिर सॉल्व भी करती रह जाऊंगी अपने प्रॉब्लम को, है ना. फिर तो हो गया मेरा पेपर, बाकी का पेपर छोड़ देते हैं, सिर्फ स्मॉल ऑसिलेशन का क्वेश्चन कर लेते हैं, यही होगा फिर. बट नो, व्हाट कैन वी डू टू मेक आवर लाइफ इजी? वी लर्न द न्यू नोटेशन. व्हाट इज द नोटेशन दैट वी लर्न? So the notation that we learned was that I will call eta 1 x1 minus x1 naught. I will call x1 minus x1 naught as eta 1, and similarly I will call, oh, I'm so sorry. And similarly I will call eta 2 as x2 minus x2 naught. Easy to understand? आगे समझ? ये हमने क्या करा? These are my new notations. ये मैंने कुछ notations करी हैं to simplify the problem, to make it easier. Okay? So अब eta 1 और eta 2 की वैल्यूज है मेरे पास. v डेल्टा x की वैल्यू है मेरे पास. क्या मैं डेल्टा x को eta 1 और eta 2 के टर्म्स में लिख सकती हूँ? x2 minus x20 is what? eta 2. x1 minus x10 is what? eta 1. So मैंने अपनी डेल्टा x का एक्सप्रेशन क्या फाइंड कर लिया? I have found that the expression for the delta x is eta 2 minus eta 1. This is my expression for the delta x. Can I write the potential energy of the system now? I can easily write the potential energy. What will be the potential energy? V is equal to half k delta x square. So we will have k by 2 eta 2 minus eta 1 whole square, and that will give me k by 2 eta 1 square plus eta 2 square minus 2 eta 1. Okay, good. Now let's do one thing. Let's do one thing now. I have found the expression for the potential energy, and now what do I have to find? I have to find the
potential energy matrix, right? That is what I have to find. Potential energy का expression तो आ गया मेरे पास, but I should be able to write the potential energy matrix. So how will I write the potential energy matrix? The potential energy matrix का definition था Vij is equal to del square V by del eta I del eta j. Okay. So what will be V11? It will be del square V divided by del eta 1 del eta 1. So I have to double differentiate V. I have to solve del square V by del eta 1 square. Let's try to differentiate. तो जब मैं इस वाली टर्म को डबल डिफरेंशिएट करूंगी ईटा वन स्क्वायर के साथ, यानी कि आई विल डेल बाय डेल ईटा वन बाहर रखते हैं, पहले हम लोग डेल वी बाय डेल ईटा वन करेंगे। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी, दिस इज द बेसिक्स है ना, मैथ्स का बहुत बेसिक वाला चीज है ये क्वेश्चन करना, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट। तो डेल वी बाय डेल ईटा वन विल गिव मी व्हाट, इट विल गिव मी 2 ईटा 1 माइनस 2 ईटा 2 k by 2, and now I have to differentiate this with respect to del eta 1. अब ये वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे eta 1 तो बैठा ही नहीं है। तो what will I get? I will get this 2 and 2 will get cancelled and I will get k. ठीक है, I will get del square v by del eta 1 square as k. So what is my first component of the matrix? The first component of the matrix will be, मैं यहाँ corner में लिखती जाती हूँ, v11 is equal to k. This is my first element of the matrix. Let's find what is v12. So v12 is del square v by del eta 1 del eta 2. Okay, that will be what, del of del eta 1. Okay, just yeah, del by del eta 1 del v by del eta 2. That is what you have to find. So let's differentiate this. जब मैं इसको differentiate करूंगी del v by del eta 2 को क्या मिलेगा मुझे? I will get k by 2 तो बाहर है, I will get 2 eta 2 inside, and यहाँ पे अगर eta किसके टर्म्स में, 2 के टर्म्स में डिफरेंशिएशन है तो माइनस 2 eta 1, एंड बाहर क्या बैठा है, del by del eta 1 ये बैठा है। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी ये वाली टर्म जीरो हो जाएंगी, यहाँ पे eta 1 तो बैठा ही नहीं है। सो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट this is equal to what? This is equal to minus k. V12 is equal to minus k. So next element which I found is minus k. ये मैंने निकाल लिया। Similarly, you can find V21. V21 कैसे निकालेंगे? Del square V by del eta 2 del eta 1 del by del eta 2. I hope I'm not fast. I mean I'm not too fast for you all. So अब इसको find करना and you will get minus k. ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस आप अपने लिए भी रखिए, सारी की सारी मैम से नहीं करवाइए। माइनस के एंड V22. What is V22? V22 का एक्सप्रेशन विल बी व्हाट, del square V by del eta 2 square. This will be what? This will be equal to k. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, बट ये आप खुद से करिए। ठीक है, खुद से करना, कैलकुलेशंस फास्ट होंगी, प्रैक्टिस करना, आपको एक टाइम के बाद समझ आ जाएगा कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। ठीक है, आपको बार बार ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक्सप्रेशन देखोगे और आप पोटेंशियल एनर्जी का मैट्रिक्स लिख लोगे। इस तरीके से आप जो है अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इतने हो सकते हो, ठीक है, परफेक्ट हो सकते हो कि आप सिर्फ एक्सप्रेशन को देखकर आप पोटेंशियल एनर्जी का मैट्रिक्स लिख दो, आपको डिफरेंशिएशन करने की जरूरत ही ना पड़े। ओके, सो now if these are the elements which I found, what will my potential energy matrix look like? It will look like this is what the potential energy matrix would look like. Got it? अब हमने पोटेंशियल एनर्जी का मैट्रिक्स निकाल लिया। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी का मैट्रिक्स। क्योंकि मैं भी समझा रही हूँ तो इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है कि क्वेश्चन को करने में, बट इफ आई वुड हैव टू डू दिस क्वेश्चन आई वुड डू दिस इन लेस देन 5 minutes. ओके,
बस क्योंकि मुझे एक एक स्टेप आपको समझाना है तो इसलिए इतना टाइम लग रहा है. सो डोंट बी अफ्रेड कि इतना टाइम लग जाएगा, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस है. नो, इट्स नॉट दैट लेंथी. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी टर्म. तो हमारे पास क्या सिस्टम था? लेट मी ड्रॉ द सिस्टम फॉर यू ऑल. दिस इज व्हाट द सिस्टम लुक लाइक, राइट? And this was K. So what will be the kinetic energy? So kinetic energy is just what? Kinetic energy आप अगर लिखते हो, kinetic energy अगर आप लिखो which is equal to T, आप लिखते हो half m. Now since the motion is only in the x direction, so you will write x1 dot square plus x2 dot square, right? This is how you would have written the kinetic energy term. अब मुझे पता है कि जो x1 है, x1 minus x1 naught है, that is equal to eta 1, and I have to solve the question in the new variables. जो मैंने नया notation दिया है उसमें मुझे question को solve करना है. and मुझे पता है x2 minus x2 naught is equal to eta 2. क्या मैं इस एक्सप्रेशन को अगर डिफरेंशिएट करूं, अगर मैं पहले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करूं तो आई विल गेट x1 डॉट इज इक्वल टू eta 1 डॉट. विल आई फाइंड इट? बिकॉज क्यों मैं इसको ऐसे क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि मुझे पता है x1 डॉट का जो है वो 0 है ना. इट इज अ कांस्टेंट, इट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन. एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो दैट विल गिव मी अ 0. इट इज नॉट अ वेरिएबल, इट इज अ कांस्टेंट. एंड इफ यू डिफरेंशिएट अ कांस्टेंट यू गेट 0. सो x1 dot is equal to 0, which means x1 dot is equal to eta 1 dot. Similarly I can write x2 dot is equal to eta 2 dot. ओके, आ गया समझ यहाँ तक? अब क्योंकि इतना यहाँ तक समझ आ गया है हमें, सो नाउ व्हाट वी विल डू, we will put the expression, मतलब ये जो eta 1 और eta 2 है, बस x1 dot और x2 dot की जगह क्या लिखना है? eta 1 dot and eta 2 dot, and we will get what? We will get the expression for the kinetic energy. So kinetic energy is half m eta 1 dot square plus eta 2 dot square. This is my expression for the kinetic energy. Now since I have the expression for the kinetic energy, I can write the kinetic energy matrix. So moving on to writing the kinetic energy matrix. Now, again, you have to remember the formula how to write the kinetic energy matrix. So you have Tij is equal to del square T by del eta I dot del eta j dot. Okay? अब अगर मुझे यहाँ से पहला एलिमेंट देखना है मैट्रिक्स का which is T11, it will be del square T divide by del eta 1 dot square. यानी कि मुझे क्या करना है? मुझे T को eta 1 से 2 बार डिफरेंशिएट करना है. तो I will get m. Solve this, try to solve this and you will get an m. आप इसको डिफरेंशिएट करो, you will get a m. अगर इसी तरीके से मैं अगर T12 फाइंड करूं तो दैट विल बी del square T अपॉन del eta 1 dot del eta 2 dot. यहाँ पे ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जिसके अंदर eta 1 और eta 2 का क्रॉस टर्म हो, तो ये तो मुझे दिख ही रहा है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, है ना. अगर मैं eta 2 से डिफरेंशिएट करूंगी तो ये वाली टर्म बचेगी, और अगर मैं eta 1 से फिर डिफरेंशिएट करूंगी तो ये वाली टर्म भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे eta 1 है ही नहीं, कोई मिक्स टर्म है ही नहीं, क्रॉस टर्म है ही नहीं eta 1 eta 2 की, तो ये तो पक्का पक्का 0 ही आना था. ये तो मुझे दिख ही रहा था एक्सप्लेनेशन से, है ना. T21 is equal to del square T by del eta 1 dot del 2 eta 2 dot del eta 1 dot, and ये भी 0 आएगा. And last we have del square T by del eta 2 dot square. Okay, try to do this, try to calculate this and you will get the value m. See, you will get the last element of this matrix as m. So can I write the kinetic energy matrix now? I can very easily write the kinetic energy matrix. So the kinetic energy matrix is m00m, and what was the potential energy matrix that we found? It was k minus k minus k and k. These were the values. Okay, let me just check from my notes that I have solved it correctly. Yes, it is correct. Okay. Now I have the two matrices. Now what do we have to do? This was the first step, right? We have to find the kinetic energy and potential energy. Next step was to find the matrices. The next step is solve the secular equation and find the values of normal frequency. So moving on to solving
secular equation. And why are we solving the secular equation? We are solving the secular equation. We are solving the secular equation to find the normal frequency. Okay, frequency. I hope the spelling is correct. I don't know. Just check the spelling once. Okay, to find the normal frequency. Now, let's solve the secular equation. So, secular equation is what? Vij minus omega square Tij, and we have a mod is equal to 0. Okay. So, let's try this. So, we have Vij का first component K. M के साथ there is a minus omega square M multiplied. Okay. Minus K. Do we have anything over here in the second element? There is nothing over here. So, minus K. Similarly, we have a minus K. Do we have anything in the kinetic energy matrix? No. So, it is minus K. And in the last term, we will have K from here and minus omega square M. This is what you have to solve. This is what you have to solve. So what did we do? We took instead of writing each thing, कि पहले मैं Vig matrix लिखती, minus omega square Tij matrix लिखती is equal to 0 लिखती. We skipped this step because now we know how to solve the matrices. बच्चे नहीं है 9th class में नहीं है कि matrices लिख लिख के solve करेंगे. तो हम लोगों ने डायरेक्टली क्या करा, वी टुक द फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट लिया, इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे लिख दिया. इसका सेकेंड एलिमेंट लिया, इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर एम से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे लिख दिया. इसका थर्ड एलिमेंट लिया, इससे मल्टीप्लाई करा, यहाँ लिख दिया. इसका एलिमेंट लिया, इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे लिख दिया. दिस इज व्हाट वी हैव डन. Okay, now we have to solve this determinant. To solve this question, we have to solve the determinant. How will we solve the determinant? Let us write k minus omega square m. We have a whole square. We have a minus and then again we have a minus k square is equal to 0. Right? Now, अब बच्चे क्या करते हैं? Easy problem को और मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं. कि हम बहुत tough question solve कर रहे हैं. Easy questions के साथ भी ऐसे करेंगे. They will what they'll start doing? They'll open these terms. इसको ओपन करने लग जाएंगे कि हाँ भाई हम तो अब तो पूरी मैथ्स दिखा देंगे अपनी कितनी अच्छी मैथ्स है हमारी. नहीं, ऐसा नहीं करना है. When you see this question can be simplified. How? इसको आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है this is the property of a square minus b square, right? This is the form. This is of what form? This is the form of a square minus b square. So what is the identity? A plus b into a minus c. This is the property, right? तो हम लोग यहाँ पर सेम चीज करेंगे. What we will do? A square minus b square is equal to what? A plus b into a minus b. This is what we have done. Easy? आया समझ कैसे करना है? अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? This k and this k is getting cancelled. Okay? And what we are left with? We are left with minus omega square m from the second bracket. What is the first bracket? First bracket is 2k minus omega square m is equal to 0. Now, what are the solutions of this equation? So, the solutions of this equation are, let me erase this property क्योंकि ये तो अब पता ही है सब बच्चों को. Okay. And what are the solutions? Solution of this equation. The solution of this equation is that omega is equal to 0 and omega is equal to 0 because we have two omegas over here, right? We have omega square. So there are two omegas over here. So we have omega is equal to 0, right? And the next we have is that omega is equal to 2k by n. And we have omega square is equal to 2k by n, right? So this bracket, basically, this bracket will give me what? This bracket will give me omega square m is equal to 2k, right? अगर मैं इस bracket को 0 के equal रखूं तो मेरे को क्या मिलेगा? मुझे मिल जाएगा omega square m is equal to 2k. तो omega square क्या हो गया? 2k by m. तो यहाँ से I can write that omega is equal to plus minus root 2k by m. Now I'm very in the very beginning I told you that omegas can never be less than 0 or 0. Omega 0 भी नहीं हो सकता और less than 0 भी नहीं हो सकता. So
यानी कि इन सब से मुझे क्या सॉल्यूशन मिला ओमेगा का? We got the solution for the normal frequency, and the solution is what? That omega is equal to under root of 2k by n. So we have just taken the positive value. Right, so answer is matching. I've just matched the answer. And this is the normal frequency, which is equal to under root of 2k by n. So first part of the question has been solved. पहला पार्ट था फाइंड द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, मूविंग ऑन टू फाइंड द नॉर्मल मोड्स. सो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई है. नाउ दिस इज द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द ओनली फ्रीक्वेंसी, राइट? दिस इज द ओनली फ्रीक्वेंसी. तो आप इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो और इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, ठीक है? बोथ ऑफ देम आर राइट. ठीक है, आप इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो. वैसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अगर मेरे पास यहाँ पे ओमेगा की कोई और वैल्यू भी आती तो उसमें से जो छोटी वाली टर्म है उसको मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल देती, सेकंड वाली टर्म को मैं फर्स्ट ओवरटोन बोल देती. सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी. जो आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज मिली है उसमें से स्मॉलेस्ट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे सिर्फ एक ही मिली है, सो दैट इज माय नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज आल्सो माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. एंड देयर आर नो ओवरटोन. आपको कोई भी ओवरटोन नहीं मिला, सो देयर इज नो ओवरटोन. फाइन. Okay, moving on to finding the normal modes. Let's find the normal modes. Okay, so now we have to find normal modes conjugate to omega is equal to root 2k by m. Okay, we have to do this. So what we will do? We will solve the equation Vij minus omega square Tij xi is equal to 0. Now, since we have Cij and Tij as 2 cross 2 matrices, how do you, what do you think कि जो column vector है उसमें कितने elements होंगे? 2 elements, right? Because 2 cross 2 चल रहा है ना हमारे पास starting से. दो conjugate, दो coordinates थे हमारे पास, तो हमारे पास column vector भी 2 elements का होगा. So, let us say that जो ये x1 है, ये है a1 and a2. Let us say, suppose, let, anything, any word you like. Okay. So say that x1 is equal to a1 and a2, and we have to solve this equation. So what we will do? We have Vij. Vij is what? It is k, right? We have k minus omega square m, and omega is what? Root 2k by m. So what will be omega square? Omega square will be 2k by m. And what will be omega square m? अगर मैं m को यहाँ ले गई, so omega square m will be 2k, right? तो मुझे क्या करना है? Vij k minus omega square m करना है. तो k minus omega square m is 2k. k minus 2k, यहाँ तो minus k ही रहेगा, यहाँ भी minus k ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? k minus 2k. And this multiplied with this multiplied with a1 a2 is equal to 0. This is what I have to solve. So k minus 2k is what? K minus 2k will give me minus k. So we have minus k, minus k, minus k and minus k. a1 a2 is equal to 0. Let's solve this. पहले वाले रो को सॉल्व करूं, दूसरे वाले रो को सॉल्व करूं, आंसर मुझे पता है सेम ही आना है क्योंकि यहाँ पे सेम कोएफिशिएंट है. Sorry. So what we will do? We will multiply this. So we will get minus k a1 minus k a2 is equal to 0. Let's take minus k common and just remove it. So we will get a1 plus a2 is equal to 0. That means a1 is equal to minus a2, or you can write that a2 is equal to minus a1. Both same, right? दोनों का same मतलब है. So what will my x1 look like now? ठीक है, अब कैसा दिखेगा मुझे? तो अब मुझे कुछ इस तरीके का दिखेगा ये a1 and minus a1, क्योंकि मुझे पता है सेकंड टर्म इसका नेगेटिव है. तो अगर ये a1 है तो ये माइनस a1. दिस इज द नॉर्मल वेक्टर. बट अभी क्या ये पूरा सॉल्व हो गया नॉर्मल मोड? नहीं, नॉर्मल मोड पूरा सॉल्व नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि अभी मुझे क्या नहीं पता. इस अभी तक मैंने इसको क्या करा है? मैंने इसको नॉर्मलाइज नहीं करा है, राइट? मुझे इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा. सो नॉर्मलाइजेशन.
How do we normalize? So for normalizing, what we will do, we will use the identity that x1t, tij, x1 gives me 1. This is the identity that we will use. Okay. Let's move on to the next page ताकि एक ही पेज पे सारी कैलकुलेशन आपकी आ जाए. So x1 transpose tij x1 is equal to 1. You have to solve this. What is x1 transpose? It will just be a1 minus a1. What is tij? m00m. And what is x1? A minus a1, and you have to put this as 1. Let's start solving. So a1 minus a1 बाहर रखते हैं. Let's solve this. So m a1 minus 0. So this will be m a1, 0 a1 minus m a1. So that will be minus m. And I have to put this equal to 1. So let's solve this. We will have m a1 square plus m a1 square is equal to 1. Okay. Can I find the value of a1 from here? So this is 2m a1 square is equal to 1. So a1 will be 1 upon 2m. And we have, okay, let me match the answer. This is equal to a1 square, and a1 will be 1 upon root 2m. This is my value of a1. This is the value of a1, right? So if the value a1 is 1 upon root 2m, now can I write the value of x1? What will be the value of x1? x1 will be, x1 क्या था? a1 और minus a1. So 1 upon root 2m, 1 minus 1. This is the expression, right? Wait. Yeah, so we have this expression. Now, uh, okay. Okay, this is the normal mode, which is corresponding to omega is equal to what? This is the normal mode, which corresponds to omega is equal to root 2k by n. And this is correct, right? So I just got confused in the omega is equal to 0 and omega is equal to root 2 n. दूसरे का check कर लिया and I thought कि हमारा 1 minus 1 क्यों आ रहा है. But we'll know in a second that why I got confused. So this is the normal mode corresponding to normal frequency omega is equal to root 2k by n. Okay, this is what we got. Now, for writing the solution, अगर मुझे solution लिखना है small oscillations का, if I want to write the solution of the small oscillations, what I also need, I need to find the normal mode corresponding to omega is equal to 0. Okay, so I also need to find the normal mode corresponding to or conjugate to omega is equal to 0. मुझे ये भी लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मुझे फाइनल सॉल्यूशन देना है, राइट. एंड मेरी जो ओमेगा के वैल्यूज थे दे वर 0 एंड रूट 2k by n. सो अगर मुझे पूरा सॉल्यूशन देना है, देन आई आल्सो नीड the value of the normal mode corresponding to omega is equal to 0. Okay. So let's find the normal mode corresponding to omega is equal to 0. So we have x, let us say 2, then which is the normal mode corresponding to omega is equal to 0. And how will we find the normal mode? We know that Vij minus omega square Tij times x2 is equal to 0. And when you will solve it, right, Vij minus omega square Tij, and you will solve it for omega is equal to 0, I will get what? I will get the expression for the V itself only, right? So I will get what? I will get k minus k minus k k
and x2, let us say it is b1 and b2. So we have b1, b2 is equal to 0. And I have to find the values of your b1 and b2. So I will get that kb1 minus kb2 is equal to 0 and b1 is equal to b2. So if b1 is equal to b2, I can write my x2 as b1, b1. But still, the question is not complete. Why the question is not complete? Because we have to find the normalization constant. Okay, we have to find the normalization constant, or you can see we have to find the value of b1, right? So how will we find the value of b1? I know that x2t tij x2 is equal to 1. So x2 transpose is b1 b1, tij is m00m, and we have b1 b1. And this is all equal to 1. So when I solve this, what will I get? I will get b1 b1, mb1, again mb1 is equal to 1. mb1 square plus mb1 square is equal to 1, and b1 from here will be 1 upon root 2m. So what is the value of b1? The value of b1 is also equal to 1 upon root 2m. So what will be my normal mode corresponding to omega is equal to 0? The normal mode corresponding to omega is equal to 0 will be 1 upon root 2m 1, 1, right? So this is what? This is the normal mode corresponding or conjugate to omega is equal to 0, right? So we have to put both the values 0 as well as the omega is equal to root 2k by n. And we also have to find the normal mode corresponding to both the values, right? So that means now, what do you understand? Yeah. So what do you understand by by these normal modes? Let's try to understand what does actually these eigenmodes, normal modes means. So if I have omega is equal to 0, I was getting my x as 1 upon root 2m 1, 1. Now what does this mean? This means that I have two masses over here. If this mass is moving in this direction, then this mass will also be moving in this direction. Okay. If this mass moves in this direction, this mass will also move in this direction. If this mass moves in this direction, this mass also moves in this direction. So if the two masses are moving in these two configurations, the normal frequency is 0. The normal frequency is 0. Okay. The normal frequency is 0 when the two masses are moving in the same direction. Okay. But if omega is equal to root 2k by m, what we got as its normal mode? We got 1 upon root 2m, 1 minus 1. This means that if we have two masses, one mass is moving in this direction, the other mass is moving in this direction. Because we have a negative sign over here. That means the direction of one is opposite to the direction of the other. Similarly, if this is moving in this direction, the second mass is also moving in this direction. So now for all the possible cases, we have a value of omega, right? Because इस case में the omega is root 2k by m. So if the system is in such motion, अगर इस configuration में है, so normal mode then is omega is equal to 0. But if the system is in this configuration, the normal mode omega is equal to root 2k by m. Okay. So this is what we understand with the normal modes. कि normal modes का क्या मतलब है? Normal modes का यही मतलब है that मुझे उनके कॉन्फ़िगरेशन को देखकर पता चल जाता है कि वो किस नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहे हैं, या फिर मैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को देखकर ये बता सकती हूँ कि दोनों के दोनों जो एटम्स हैं या दोनों के दोनों जो मासेस हैं सिस्टम के अंदर, क्या वो एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में या दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस. ओके, सो दैट इज व्हाट वी गेट टू नो about the configuration through the normal modes. Okay, now
If I have to write the generalized solution, then the generalized solution for these small oscillations will be, it will be eta 1, eta 2 is equal to C1, 1 upon root 2m. Then we write the mode. So the first mode is 1, 1, that is corresponding to omega is equal to 0, e raised to power iota omega t, that is how you write. तो omega 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e raised to power iota 0t plus some constant c2, 1 upon root 2m, 1 minus 1, e raised to power iota omega t, and this time omega is what, 2k by m t. So this is my generalized solution. इसको मैं ऐसे लिखूंगी c1 by root 2m 1 1 plus c2 by root 2m 1 minus 1 e raised to power iota root 2k by m t. So this is my generalized solution for the small oscillations. So the question can also be find the generalized solution of your small oscillation, and ये जो आपके C1 और C2 की values है, how will you find the C1 and C2 values? The C1 and C2 values can be found using the boundary conditions. Okay, so C1 and C2 की values आप कैसे find कर सकते हो? You can find these values using the boundary condition, कि आपको बता देंगे कि इस point पे आपका जो मास 1 है वो इस पोजीशन पे है, इस टाइम पे ये जो मास है इस पोजीशन पे है. नाउ यू फाइंड व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन. तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए दे विल बी आस्किंग, दे विल बी गिविंग यू द बाउंड्री कंडीशंस. अगर उनको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो दे विल गिव यू द बाउंड्री कंडीशंस. लेकिन अगर उनको जनरलाइज सॉल्यूशन चाहिए तो जनरलाइज सॉल्यूशन को आप क्या कर सकते हो, यू कैन कोट द जनरलाइज सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ द constants, right? So C1 and C2 को आप यहीं पे छोड़ दोगे and you will give this as your generalized solution. Okay, so this is the generalized solution of your question. Now this question could also have been solved using a very simple method. This is the method which usually is being taught in the classes. But there is a very simple method to attempt such questions when you are going for competitive exams, such as you have NET, you have GATE, so these such competitive JES, all these exams. When you are going for the competitive exams, you need to learn a easier method to solve the small oscillations questions जो कि आप जल्दी जल्दी solve कर सकते हो, है ना? So in the next class, what we will be doing in the next class, we will solve the same question. इसी question को we will be solving using an easier method. जिस method को I recommend you all to use when you are solving the questions in the competitive exams. Okay. So the next class is very, very, very important from the point of view that you have to sit for your competitive exams. And in the next class, we'll be doing an easier method. And after that, what we'll be doing, we will be taking a lot of numericals from the small oscillations only, and we will be practicing them. So we will have different configurations of springs, and we will solve each question. We'll find the T matrix, kinetic energy matrix, and find the normal frequency and the normal modes for such configurations. So I hope you understand what we did in this today's class, and thank you so much for joining me. If you like the video, definitely like the video. Comment if you have any doubts regarding the things that we did in the class. Do share this video with all your friends. Help them to ace their exams, and do subscribe my channel for more educational content. So thank you so much, everyone. And with this, let me close the meeting. Okay, thanks so much. Bye, guys.